बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है डैट इज़ एजुकेशन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, और उसकी टाइप्स में से इजिप्शियन एजुकेशन, ग्रीक एजुकेशन हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रोमन एजुकेशन डैट इज़ डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेटर रोमन एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। रोमन एजुकेशन का टाइम पीरियड इज़ 750 BC टू 450 AD। सो इससे पहले कि मैं रोमन एजुकेशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूं, लेट्स हैव अ लुक ऑन अ स्मॉल वीडियो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन एजुकेशन। So that was a small video about the introduction of ancient Roman education. If we talk about Roman education, it is divided into early Roman and later Roman education. Let's start it. अगर हम रोमन एजुकेशन इन एंशियंट टाइम्स की बात करें तो वो फॉर्मल नहीं थी। दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल और फेमिलियर सिस्टम ऑफ एजुकेशन in the early republic to a tuition based system during the late republic and the empire. रोमन एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर ग्रीक सिस्टम पर बेस करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट ट्यूटर्स जो थे रोमन सिस्टम में डैट वर ग्रीक स्लेव्स। सो रोमन एजुकेशन ग्रीक एजुकेशन से काफ़ी मिलती जुलती है।
एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एंशियंट रोमन्स। अगर हम बात करें रोमन एजुकेशन में कि वहाँ पर एज अ सोसाइटी एजुकेशन को किस तरह से देखा जाता था या एजुकेशन किस तरह से आगे बढ़ती थी, तो क्लास डिफरेंस वहाँ पर बहुत मैटर करता था। जो अमीर लोग थे, द रिच पीपल, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजकर और अच्छी स्कूलिंग करवा कर एजुकेशन दिलवा देते थे। बट एज फार एज द पुअर वर कंसर्न, दे डिड नॉट रिसीव अ फॉर्मल एजुकेशन, बट मैनी ऑफ देम स्टिल लर्न टू रीड एंड राइट। और वहाँ पर स्कूल्स भी एक कंप्लीट बिल्डिंग की तरह या एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट की तरह नहीं बनाए जाते थे। वहाँ पर जो रोमन स्कूल्स थे वो किसी भी बिल्डिंग में कोई शॉप कह लें उसकी एक्सटेंशन होती थी। तो वो जो कोई भी रूम या कोई भी वहाँ की एक कह सकते हैं हम चार दीवारी के ऊपर एक कर्टन लगा देते थे एक शॉप से उसको सेपरेट करने के लिए और उसको स्कूल का नाम दे देते थे। सो द रिच पीपल इन एंशिएंट रोम पुट अ ग्रेट डील ऑफ फेथ इन एजुकेशन, बट द पुअर इन एंशिएंट रोम डिड नॉट रिसीव अ फॉर्मल एजुकेशन. Children from rich families, however, were well schooled and were taught by the private tutor at home or went to what we would recognize as schools. In general, schools as we would recognize them were for boys only. लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ लड़कों को एजुकेशन दी जाती थी. नेक्स्ट, लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज में हाउस होल्ड वर्क सिखाए जाते थे कि उनको एक अच्छा हाउस होल्ड वाइफ बनाया जा सके. Next, Roman schools were rarely an individual building but an extension of a shop separated from the crowd by a mere curtain, जैसा कि मैंने अभी बता दिया. So that was a small introduction about the Roman education. Now let's start early Roman education. Early Roman education के aims ज़्यादातर military, civic, utilitarian या moral aims थे that were involved in the early Roman education. और वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा फोकस से पढ़ाए जाते थे डैट वर लॉज, फिजिकल एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. मेथड्स दैट वर यूज्ड इन द अर्ली रोमन एजुकेशन वर मेमोराइजेशन, ग्रामर एंड इंटेंसिव ड्रिल ऑफ स्पीच. और उनकी लेगेसी में ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ लॉ इंक्लूड थे. When we talk about later Roman education, so it includes oration, management and civic aims. Oration means that is something related to speech. कंटेंट्स में ज़्यादातर अप्लाइड साइंस, हिस्ट्री, नेचुरल साइंसेज, रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन थी. अर्ली और रोमन में ज़्यादा ये डिफरेंस भी है कि अर्ली रोमन एजुकेशन ज़्यादातर इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन थी, जबकि लेटर रोमन एजुकेशन फॉर्मल हो चुकी थी और स्कूल्स भी बन चुके थे एंड इट वाज अ काइंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. नेक्स्ट है मेथड्स, मेमोराइजेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग लेगेसी, मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. कमिंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि रोमन एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू रोमन्स इटसेल्फ, बट बॉयज़ फ्रॉम पुअर एंड रिच फैमिलीज वुड अटेंड अ प्राइमरी स्कूल टिल दे वर 12 years old. दे लर्न टू रीड, राइट एंड बेसिक मैथमेटिक्स. जो लड़कियां थी उनको बहुत कम स्कूल में भेजा जाता था, लेकिन वो ज़्यादातर घरों में ये सीखती थी कि हाउ टू रन अ गुड हाउस होल्ड, हाउ टू मेक अ गुड वाइफ एंड म्यूजिक एंड स्विंग, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी. और मैंने ये भी बता दिया वीडियो में कि स्कूल्स प्रॉपर बिल्डिंग्स की तरह नहीं बनाए जाते थे. इफ़ यू वर वेल्दी यू मे हैड अ ट्यूटर एट होम, लेकिन उसके अलावा किसी भी शॉप को कर्टन से डिवाइड कर दिया जाता था. डैट वॉज अबाउट रोमन एजुकेशन. सो अगर हम प्रिमिटिव एजुकेशन की बात करें तो उसका मेन पर्पज़ ये था कि वो अपने बच्चों को ट्रेडिशंस और उनकी जितनी रिवायात थी, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते आए थे, उनसे दूर ना करें. वो बच्चों को ट्रेडिशंस इतने अच्छे से सिखा दें कि बच्चों को पता लग जाए हाउ टू बिकम अ गुड मेंबर्स ऑफ देयर ट्राइब और बैंड. पेरेंट्स की यही एक ही विश होती थी कि उनके बच्चे उसी तरह ही उनकी ट्रेडिशंस, उनकी रिवायात, उनके कल्चर को फॉलो करें जिस तरह वो अपने पेरेंट्स की करते आए हैं. सो देयर इज़ अ मार्क्ड एम्फेसिस अपॉन ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप बिकॉज प्रिमिटिव पीपल आर हाईली कंसर्न्ड विद द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ ट्राइबल मेंबर्स एंड द थोरो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ. दैट वॉज ऑल अबाउट the ancient education, or we can say primitive education in primitive societies. Thank you so much, and if you have any kind of question you can state